So we started with this topic of cost accounting system, and I explained you yesterday that even though financial accounting and cost accounting, both of these are branches of accounting only, but ultimately there are certain differences in these two systems. Like certain items which we account for in financial records, we may not account for in cost records. Certain items which we record in cost records, we may not account for in financial records. So then question arises that how cost records will be maintained. So we understood that cost records can be maintained in two different ways. One is integrated system, another is non-integrated system. As the name suggests, integrated system means where the financial records and cost records are maintained in combined manner together, and non-integrated system where both the records are not integrated with each other means both the records are maintained separately. So cost records will be separate and financial records will be separate. Naturally, if I am going to maintain two records separately, cost records and financial records separately, then obviously the profitability which I'll get will be also separate. In integrated, there is no question of separate profitability. The reason being, we will be having combined record. So there won't be separate profitability. But in case of non-integrated system, which we studied in last lecture, we started solving problem on that. You will see there are two different profit figures. One under cost records and one under financial records. And if there are two different profit figures, then we need to reconcile these two profit figures. ये दो profit figure अपने को reconcile करने पड़ेंगे. Reconciliation के part में थोड़ा रुक के चलेंगे अपन, maybe in next lecture, which is going to be last lecture for this topic, which we will conduct tomorrow morning. So right now we are focusing on the records which are maintained under non-integrated system. Today we will complete that. We will finish all the problems of non-integrated system. Then we will go to integrated system. Integrated system is very simple, as I told you yesterday. And once you study non-integrated, integrated is actually a formality. वो एक formality रह जाता है. यहाँ पे तो भी क्या है कि कैश का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये हम कुछ मेंटेन नहीं कर रहे कॉस्ट रिकॉर्ड्स में. लेकिन डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए वी नीड one account to give the effect, and for that we open one control account called as cost ledger control account, or it is also known as general ledger control account. So these accounts, earlier the accounts which we discussed, we listed it down like stores ledger control account, wages account, factory overheads account, WIP account, administration overheads account, finished goods account, selling and distribution overhead account, cost of sales account, costing P&L account. All these accounts are routinely maintained like we do in financial accounting. Only one account is opened separately, specifically, which is needed to complete the double effect, and that is cost or general ledger control account. And through that account the double entry records are completed. तो ये अपन ने का डिटेल में समझा, इसके जर्नल एंट्रीज भी हमने डिस्कस किए. Now let us talk about the second problem which we were solving. I think due to paucity of time we could complete only the posting, दिए हुए ट्रांजेक्शन का posting हमने कल complete किया था. We are supposed to complete the problem now. Just we have to close the accounts one by one. बराबर? Yes. आ जाओ सब लोग, पेज नंबर 957. 957. सारे ट्रांजेक्शंस पोस्ट हो गए थे क्या? आखिरी क्या है? सेल्स है ना? हाँ, सेल्स भी पोस्ट हो गया है. Yes. So let's close these accounts one by one now. First account is stores ledger control account. अब थोड़ा सा फिर से आपको कल की प्रॉब्लम में जाना पड़ेगा. आप सामने देखोगे तो सारी चीज ध्यान में आ जाएगी. आप अगर देखोगे तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में बाकी सारे इफेक्ट्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं. ओपनिंग बैलेंस आ गया है, ड्यूरिंग द ईयर परचेस आ चुका है, कैरेज इनवर्ड ने लिया है उसमें. WIP में जितना ट्रांसफर किया फैक्ट्री फ्लोर पे, मशीन फ्लोर पे, जितना स्टोर्स में से गोडाउन में से स्टॉक गया है वो ट्रांसफर हो चुका है. जितने इनडायरेक्ट मटेरियल हमने सप्लाई किए वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के हम अकाउंट फॉर कर चुके हैं. सो व्हाट इज लेफ्ट इन स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इज क्लोजिंग बैलेंस. सो जस्ट क्लोज द अकाउंट.
Buy balance carried down. Asterisk mark balancing figure. Total is 4,71,000. 4,71,000. So balancing figure is 63,000. 63,000. As far as wages account is concerned, you will see it is tallied. Total wages paid was 6,15,000. Out of that, productive wages charged to WIP 5,90,000, and indirect wages, unproductive labor charged to factory overheads 25,000. So total 6,15,000. Administration overheads. Total is 18,600. Opening carried forward balance is 600, and during the year paid amount is 18,000. So total 18,600, but absorbed administration overheads are 18,400. Now 200 rupees administration overheads are under absorbed. I explained you yesterday there are two options to give the treatment. One is charge it to costing P&L account because it is under absorbed, and another option is carry forward it. Let's follow consistency. If you see the given opening trial balance in the problem, you will find that the overheads under absorbed or over absorbed are carried forward to next period. So because those are carried forward, we will follow the consistency policy, which we study as one of the fundamental accounting assumptions as per AS1. So consistency we will maintain. We will carry forward the unabsorbed, under absorbed or over absorbed overheads. So buy balance carried down. It is 200 rupees. Correct? Next, work in progress. I think closing balance is missing. Closing WIP is missing. Rest everything is recorded. Buy balance carried down. Total is 12 lakh 40,400. 12,40,400. Balancing figure is 68,400. Correct? Eh? What about factory overheads? It is tallied 180. So there is no under absorption or over absorption of factory overheads. Am I not audible on online platform? आवाज बढ़ाओ सर, बहुत आवाज बढ़ाया हुआ है यार ऑलरेडी. हेलो यूट्यूब स्टूडेंट्स, आवाज नहीं आ रही क्लियर? Finished goods account, closing balance is missing. Buy balance carried down. Total is 12,46,200. 46,200 is the closing balance. Barabar? Selling and distribution overheads. Now, selling and distribution overheads will be absorbed under cost of sales. Those will be absorbed over the cost of sales. अब exactly दिया नहीं कितना absorb किया है, तो the expenditure which is incurred will be charged to cost of sales. So by cost of sales, $13,400.
13,400. Cost of sales account debit side to selling and distribution overheads. $13,400. Where do we transfer the cost of sales? Costing P&L account. So just close the account and transfer the balance to costing P&L account by costing profit and loss account. Total is 12,13,400. 12,13,400. 12,13,400. Go to costing P&L account, debit side, to cost of sales. 12,13,400. 12,13,400. उसका क्या नाम है बाहर वो बंदा, उसको बुलाओ तो। नहीं, शिवा तो है। श्रीधर, देख तो है क्या यूट्यूब पे आवाज क्यों नहीं आ रही इनको? इससे ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकता भाई मैं। सेल्स अकाउंट, जस्ट क्लोज सेल्स अकाउंट, ट्रांसफर इट टू, नहीं है, कॉस्टिंग P&L. To costing profit and loss account, 15 lakhs. Go to costing P&L account by sales, 15 lakhs. Just close the costing P&L account. You will get the profit. Total is 15 lakhs. Where do we transfer the profit? Normally we transfer it to capital, but now we don't maintain capital under cost record, so it will be transferred to cost ledger control account. How much it will be? 286,600. 286,600. Go to cost ledger control account by त्याला बोलवा श्रीधरला, त्याच्यावर युट्यूबवर आवाज येत नाही म्हणतात मुलं, कमी येतात, चेक कर म्हणायचं काय झालं. By costing profit and loss account, 286,600. Correct? That's it. Just close this account, get the closing balance in cost ledger control account. Wait. Let everybody do it. Please do it independently. Don't copy the ready-made answers from the screen. Take total everyone. $1,677,800 is the total.
177,800. 177,800 is the closing balance in this account. Everyone got it? Then simply we are supposed to prepare trial balance. फर्स्ट अकाउंट से देखते हो कौन से अकाउंट में बैलेंस है, कितना कितना बैलेंस है, वो लिखते जाओ. बताओ लाइन से मेरे को. सबसे पहले स्टोर्स लेजर कंट्रोल. कितना बैलेंस है इसमें? 63,000. ओके. नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अंडर एब्सॉर्ब्ड है ना, डेबिट बैलेंस है ना. ऍडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड्स अकाउंट. नाही हे युट्यूब मुलं म्हणत होती आवाज येत नाहीये क्लिअर, पण आता येत आहे की क्लिअर आहे म्हणून. एकदा चेक कर बाहेरून युट्यूबवर. आलाय आवाज बरोबर? एडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड्स अकाउंट 200 रुपीज डेबिट अंडर एब्सॉर्ब्ड है. देन WIP अकाउंट 6,000 68,400. Okay. Next, finished goods 46,200. Then cost ledger control account. Cost ledger control account 177,800. और अगर करेक्ट सॉल्व हुआ है तो टैली होना चाहिए. $177,800. $177,800. आया? Any problem? Before I started yesterday discussing this topic, I told you that this topic will be helpful for you in certain ways. Like a standardized solution you will find in costing subject in this topic only. Standardized format of solution. If you understand it logically, it is going to be very simple. You can cross-check your answer. ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है. सो कल तो चलो पहला दिन था तो लगता है कि सर तो बोलते रहते, समझ में आए इसलिए. बट आई एम श्योर कि नाउ यू विल एग्री विथ मी कि अगर आप ये एंट्रीज अच्छे से दिमाग में रखो तो इट इज वेरी इजी एंड सिंपल एंड यू कैन श्योरली स्कोर इन दिस टॉपिक. कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3. छोटा सा प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम. From the following details, show the necessary accounts in cost ledger. Opening balance, closing balance, materials, work in progress with stock, transactions during the year, material purchased, wages paid, overheads incurred, overheads absorbed, sales. जितने जरूरी उतने अकाउंट बनाएंगे अपन. चलो. In the books of dash dash, name is not given. नाम दिया नहीं है ना.
cost records, stores ledger control account, stores ledger control account, six lines. WIP account, six lines. Finished goods account, finished goods account by six lines. Then wages account, थोडासा आवाज कमी करना, इको येतोय. Wages account, then overheads account. सिर्फ overheads टर्म यूज हुआ है, कौन से overheads से बोला नहीं है. So overheads account, then cost of sales account, sales account, costing profit and loss account, एक बार फिर से बताता हूँ, अकाउंट्स देख लो. स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP अकाउंट, finished goods account, wages account, overheads account, cost of sales account, costing profit and loss account. Yes बेटा, yes, thank you for reminding. मैं भूल गया. नोट्स देता हूँ. फॉर्मेट ड्रॉ कर लो. सेकंड प्रॉब्लम में एक दो नोट्स लिखा के देने, वो देता हूँ लिखा के. ये फॉर्मेट कंप्लीट कर लो. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, cost ledger control account,
cost ledger control account. Draw the format quickly. ट्रायल बैलेंस बोला नहीं है, चाहिए तो इनमें बना देंगे अब। क्या 2 मिनट का काम है, बनाना है तो बना देंगे, पूछा नहीं है प्रॉब्लम लेके। सेकंड प्रॉब्लम में आओ बेटा। सेकंड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में 2 नोट्स लिखने अपने को उसमें। सेकंड प्रॉब्लम इसके पहले जो सॉल्व किया, नोट्स यहां पे भी जगह है, वहां लिख दो ना, 2 नोट्स लिखने हैं, है ना। हाँ, सेकंड प्रॉब्लम में नोट्स नंबर 1, कैरेज इनवर्ड being direct cost incurred on purchase of goods, incurred on purchase of goods is debited to store's ledger control account, is debited to store's ledger control account। वापस रिपीट करता हूं, कैरेज इनवर्ड बीइंग डायरेक्ट कॉस्ट ऑन परचेस ऑफ गुड्स is debited to store's ledger control account, full stop। Number 2, as the under oblique over absorbed overheads, as the under oblique over absorbed overheads are carried forward from previous year to current year, comma, by following consistency again, comma, the under oblique over absorbed overheads, the under oblique over absorbed overheads at the end are carried forward to next year, तो व्हाट वी आर सेइंग इज पिछले साल के कैरी फॉरवर्ड किए प्रॉब्लम में देते वक्त ओपनिंग बैलेंस में थे, इसलिए हमने क्लोजिंग के भी कैरी फॉरवर्ड किए। अदरवाइज क्या ट्रीटमेंट बताया था मैंने कल आपको, अंडर एब्सॉर्ब्ड इट इज ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो अंडर एब्सॉर्प्शन या ओवर एब्सॉर्प्शन अगर हुआ है वी अदरवाइज ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट सिंस इफ यू सी द ओपनिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सेकेंड प्रॉब्लम विच वी सॉल्व, उसमें ओपनिंग में ही कैरिड फॉरवर्ड बैलेंसेस है प्रीवियस पीरियड के, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी सेम पॉलिसी वी आर कंटिन्यूइंग एट द एंड ऑल्सो। Yes guys, so now we are ready with format of question number 3. Let's solve this problem quickly.
From the following details, show the necessary accounts in cost ledger. Materials, it is stores ledger. Go to stores ledger control account. To balance brought down. To balance brought down 8,000 rupees. Buy balance carried down 11,000. Obviously, no need to say opening balance will be written on the first line. Closing balance will be written on last line before total. So to balance brought down 8,000, buy balance carried down 11,000. Similarly, work in progress account, WIP account. To balance brought down 5,000. Buy balance carried down 9,000 rupees. We are provided with opening and closing balances of stores, WIP as well as finished goods. Go to finished goods account, to balance brought down 10,000 and buy balance carried down 10,000. There is one hidden adjustment, guys, which we need to give effect, and that hidden adjustment is, मेरे को बताओ टोटल डेबिट बैलेंसेस ओपनिंग में कितने हो गए? ओपनिंग के स्टोर्स लेजर का 8,000, WIP का 5,000, 8 और 5 13 और फिनिश स्टॉक का 10,000. तो ऐसे 23,000 का टोटल ओपनिंग बैलेंस है. सिर्फ डेबिट में बैलेंस रह सकता है क्या? हमने कल डिस्कस किया था ये पॉइंट. So exactly same credit balance will be there in contra account which we open. That contra account is cost ledger control account. Cost ledger control account, credit side, buy balance brought down. And if you forget this effect, अगर ये effect आप भूल गए तो पूरा sum wrong हो जाएगा बाद में, टैली नहीं होगा आपका. Buy balance brought down 23,000. ऐसे में क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकता हूं इसका भी, या एंड में जब टैली करेंगे तब लिखेंगे. 11, 9, 20, 20 और 12, 32, 32,000 का क्लोजिंग बैलेंस क्लियर दिख रहा है. बट एनीवे हम सॉल्व करते पूरा, एंड में क्लोज करेंगे तब आ ही जाएगा 32,000 का बैलेंस. मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंट्री, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. So debit side of stores ledger control account to cost ledger control account 25,000, 25,000. Go to cost ledger control account credit side by stores ledger control account 25,000. Wages paid entry, wages account debit to cost ledger control account, wages account debit side to cost ledger control account 10,000 rupees. Second effect of it,
cost ledger control account credit side by wages. $10,000. Guys, what is written in bracket as far as wages are concerned? Including 2,000 for indirect wages. इसका मतलब ही क्लियर है कि डायरेक्ट वेजेस 8,000 है. टोटल वेजेस पेड आर 10,000. Out of that, 2,000 are indirect, means 8,000 will be direct. Where do you charge the direct wages? WIP. Very good. What is the entry? WIP account debit to wages account by WIP account bracket direct wages. ₹8,000 by WIP direct wages 8,000. Go to WIP account to wages 8,000. Where to charge the indirect wages? Overheads by overheads. अब कुछ बोला नहीं है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ही है. By overheads bracket indirect wages. $2,000. Overheads account debit side. To wages account 2,000. Overheads incurred entry. Overheads account debit to cost ledger adjustment account. Overheads account debit side to cost ledger control account. To cost ledger control account. एक मिनट. अमित सर ऐप्स बंद ही नहीं करते शायद. ये अमित सर का टैब है, आईपैड है उनका. बार बार वो, हाँ ना, बंद ही नहीं कर रहे सर. अकाउंट्स के इसमें हमको मेरे आईपैड पे ये नोटेबिलिटी काम नहीं करता ना. अकाउंट्स के फॉर्मेट्स बड़े होते तो ये रिस्ट्रिक्टेड स्पेस देता है, तो वन नोट यूज करता हूँ मैं, इसलिए ये आईपैड यूज करना पड़ रहा है. तो इसमें बहुत डेटा दिख रहा है जो बार बार ये हो रहा है. टू नहीं ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बोलने का मतलब है. टू ये देखे है क्या हो रहा है. तोड़ दूं भाई, परवड़ेगा नहीं ना रे. दूसरा टैब दे लिखे देना उनको, गरीब आदमी हूं मैं. टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. हाँ, ये लोग जो पहली बार मेरे से सीख रहे हैं, आप क्या बोल रहे थे, कुछ भी मैं जो बोल रहा हूँ आपको मानना पड़ेगा ना. ये जो पुराने स्टूडेंट्स है ये ठीक है, मजाक उड़ाते हैं. गरीब आदमी तो हुनर है. मैं बाय ओवरहेड्स मैं कैसे क्या लेट था. तो लेक्चर 7:30 का है ना. मुझे नहीं मालूम था ये. इसको क्या, मुझे 7:30 की बात हुई है. एंड आई स्टार्टेड एट 7:29. मैं 1 मिनट पहले स्टार्ट किया हूँ लेक्चर. वैसे ये मालूम नहीं था ना. अब ये मालूम होने के बाद कल आप देखेंगे क्या होता है. नहीं, विनोद सर ने मेरे को ये अपडेट नहीं दिया था कि 7:20 का बच्चों को बोला हुआ है. अगर वैसे बोलते तो मैं आ जाता टाइम पे.
पार्टी, भाई तुम लोगों को पार्टी देने के लिए मुझे पहले लोन वोन लेना पड़ेगा। बाय ओवरहेड्स 8,000 पोहे देखे, अब कितने पोहे खाएंगे बस ना। बाय ओवरहेड्स 8,000, बहुत ध्यान रहता है तुम्हारा मैं क्लास में क्या बोलता हूँ क्या नहीं। यूट्यूब पे बोल रहा है फैक्ट्री भी तो है। बाय ओवरहेड्स अकाउंट 8,000, एनी प्रॉब्लम गाइज? भाई इधर लोग बैठे हुए समझ में आ रहा है ना सब? पक्का? यस। 8, नहीं नहीं नहीं, सो नहीं रहे, लिख रहे वो लोग भी, अच्छे बच्चे हो। Overheads absorbed. Overheads absorbed. What is the entry for absorption of overheads? We incorporate them in WIP. What is the entry? WIP account debit to overheads account. Go to overheads account by आज दोपहर में एसएम के लेक्चर में अमित सर मिलेंगे तो बोलना कि सुशील सर बोले, बोलना भी आईपैड बदल दो बोले, बोलना। 9,000. Go to WIP account, to overheads. What is the entry for sales? Cost ledger control account debit to sales account. Sales account credit side by cost ledger control account 50,000. Cost ledger control account debit side to sales account 50,000. Given information is over, guys. Let's close the accounts one by one, but now be careful. कई सारे figures missing है, गड़बड़ या confusion में पक्का गलती होने के chances है। केयरफुली देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या मिसिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा लगने दो, बट थोड़ा दिमाग लगाओ। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट अगर हम देखें तो अपने पास ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग स्टॉक कितना था 8,000, फिर हमने परचेज कितने किए वो दिया है 25,000, सो ऐसे टोटल स्टॉक मेरे पास हो गया 33,000 का, बट उस 33,000 में से क्लोजिंग बैलेंस बचा है 11,000, तो क्या मिसिंग है यहाँ पे? मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर मिसिंग है। वापिस बोलता हूं, ओपनिंग बैलेंस इज 8,000, ड्यूरिंग द ईयर परचेस्ड इज 25,000, सो टोटल इज 33,000. Out of 33,000 rupees total stores, total goods, closing balance is of 11,000. It means consumption is of 22,000. So where do you charge the consumption of material? WIP. Very good. What is the entry? WIP account debit to stores ledger control account by WIP account. मैंने कल भी बोला था स्पेसिफिकली, वापस रिपीट कर देता हूं बेटा, जहां पे भी आप बैलेंसिंग फिगर ले रहे हो पुट एस्टेरिस्क मार्क, अदरवाइज मैं आपको बोलता हूं, आपको स्टडी लीव में जब सेल्फ स्टडी करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि नंबर कहां से आए, क्योंकि ये प्रॉब्लम में दिया हुआ नंबर नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो विदाउट फेल पुट एस्टेरिस्क मार्क देयर सो दैट यू विल कम टू नो दैट दिस इज बैलेंसिंग फिगर 22,000. Go to WIP account to नेक्स्ट अकाउंट इज WIP अकाउंट। आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, सोचो क्या क्या है, कहां क्या मिसिंग है इस अकाउंट में। ओपनिंग क्लोजिंग WIP के फिगर्स दिए प्रॉब्लम में अपने को, वेजेस कितने चार्ज किए ड्यूरिंग द ईयर वो दिए, ओवरहेड्स दिए, और मटेरियल भी आ गया है। तो WIP में से जितने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुए वो मिसिंग है, तो यही समझ में आना जरूरी है क्लोज करते हो अकाउंट। बोलो एंट्री, finished goods account debit to WIP account by
finished goods account. Total is 44,000 is the total. Balancing figure is 35,000. Go to finished goods account. To WIP. To WIP. 35,000. अभी मेरे को बोल फिनिश गुड्स में क्या मिसिंग है? Goods sold, cost of goods sold. Where do you transfer it? Cost of sales by cost of total is 45,000. Balancing figure is 33,000. We have also drawn cost of sales account to finished goods. $33,000. Next account is overheads. Now tell me overheads incur कितने हुए? वेजेस तो टैली हो गया ना, वेजेस इज टैली. ओवरहेड्स इनकम कितने हुए? 10,000 रुपए. एब्सॉर्ब कितने हुए? बोल तो 1,000 अंडर एब्सॉर्ब्ड है. अब पिछले सम में हमने बोला था कि कंसिस्टेंसी फॉलो की. अब यहाँ पे कुछ दिया है क्या ओपनिंग में? नहीं. तो वी विल ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Under absorbed overheads will be transferred to costing P&L account. So by costing profit and loss account. ₹1,000. Go to costing P&L to overheads. कितना? ₹1,000. Next account is cost of sales. Just close the account. By costing P&L account 33,000. Correct? Next is costing P&L के डेबिट में ले लो ना. To cost of sales 33,000. Costing P&L account debit side to cost of sales 33,000. Next account is sales account. Transfer it to costing P&L to costing profit and loss account. $50,000. Costing P&L credit side by sales 50,000. Close costing P&L, you will get profit which we transfer to cost ledger control account. To cost ledger control account, asterisk mark balancing figure, bracket transfer of profit.
बोलो 16,000 करेक्ट. Cost ledger control account credit side by costing P&L account. $16,000. Close this account, get the closing balance. To balance credit down. Total is 82,000. Balancing figure is, मैंने बोला था ना 32,000 आएगा. क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए जो है प्रॉब्लम में डेबिट बैलेंस है वो 32,000 के, तो इस अकाउंट में कंपल्सरीली क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस उतना आना ही पड़ेगा ना. डन. ट्रायल बैलेंस बनाने का बोला नहीं है प्रॉब्लम में, बना लेना है, बना लो. चलो, सो सिंपल. ट्रायल बैलेंस as on blank, as on, keep it blank, dash dash. Particulars, debit rupees, credit rupees. बोलो बेटा. Source ledger. कितना बैलेंस है? WIP 9,000. Finished goods 12,000. Cost ledger control account 32,000 का क्रेडिट बैलेंस. तो इस प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था समझने का कि ओपनिंग बैलेंसेस सारे डेबिट दिए हुए तो उतना करस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट बैलेंस कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट रहेगा. वो नहीं लिया तो टैली नहीं होगा. एनी प्रॉब्लम?
Problem number fourth. Fourth problem. A fire destroyed some accounting records of a company. You have been able to collect the following from the spoiled papers and as a result of consultation with accounting staff in respect of January 2021. Incomplete ledger entries, raw material, work in progress, creditors, manufacturing overheads, finished goods. Additional information. The cash book showed that 89,200 have been paid to creditors for raw material. Ending inventory of work in progress included material rupees 5,000 on which 300 direct labor hours have been booked against wages and overheads. The job card showed that workers have worked for 7,000 hours. The wage rate is 10 rupees per labor hour. Overhead recovery rate was rupees 4 per direct hour. You are required to complete the above accounts in the cost ledger of the company. 5 अकाउंट दिए, ये 5 अकाउंट अपने को कंप्लीट करने हैं. इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, आग लग गई थी कंपनी में. अरे प्रॉब्लम दिया है ना भाई. फायर डिस्ट्रॉयड सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी. तो रिकॉर्ड जल गए, आधे अधूरे जो भी पेपर्स मिले, स्पॉइल्ड पेपर्स. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कंसल्टेशन विद अकाउंटिंग स्टाफ ये इंफॉर्मेशन मिली है जो आधी अधूरी है. तो या हाफ हजार्ड इंफॉर्मेशन जो प्रॉब्लम में अवेलेबल है, जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसको अपने को कंप्लीट करना है. नाउ मोस्ट ऑफ यू, रादर एवरी वन ऑफ यू, इफ यू आर फ्रॉम फाउंडेशन स्ट्रीम, आपने सिंगल एंट्री सीखा ही नहीं है. तो कल आपने मेरे को बताया ये बात. तो बेटा सिंगल एंट्री में एग्जैक्टली यही होता है. डबल एंट्री रिकॉर्ड्स फॉलो नहीं होते तो यू डू नॉट गेट अ प्रॉपर ट्रायल बैलेंस. सो हाउ टू असर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी, फिर प्रॉफिट ढूंढे कैसे, तो उसको सिंगल एंट्री बोलते हैं. सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर देयर इज नो सिस्टम. यानी आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली. जहां प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम है वहां तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स है ना. जहां कोई सिस्टम ही फॉलो नहीं हो रहा है, कुछ ट्रांजेक्शन. और एक बात अब इससे नॉलेज के लिए तुमको बता दूं कि सिंगल एंट्री बोलने के बाद में ना दिमाग में ये आता है कि डबल एंट्री मतलब 2 इफेक्ट्स. तो सिंगल एंट्री सिस्टम बोल तो एक इफेक्ट रहेगा. बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि जहां डबल एंट्री फॉलो नहीं हो रहा है. कुछ ट्रांजेक्शन 2 इफेक्ट देख रिकॉर्ड होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन सिंगल इफेक्ट देखे रिकॉर्ड होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन ऑल टुगेदर इग्नोर ही होते, रिकॉर्ड नहीं होते. तो ऐसे हाफ हजार रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं ना, उसमें फिर अपने को बोलते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढो. अब फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हो तो आपने क्या किया हुआ है अकाउंट्स में हमेशा? आपको एक ट्रायल बैलेंस था दिया हुआ, जो टैली ट्रायल बैलेंस था. नीचे उसके एडजस्टमेंट्स दिए हुए रहते थे और आप ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बैलेंस शीट बना लेते थे. जहां प्रॉपर ट्रायल बैलेंस ही नहीं है, आधे अधूरे रिकॉर्ड है, तो प्रॉफिट ढूंढने का कैसे? दैट इज सिंगल एंट्री का टॉपिक. वेरी इंटरेस्टिंग कि दी हुई इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन को यूज करके एक्सप्लॉइटिंग दैट इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम यू हैव टू कंप्लीट द रिकॉर्ड्स. आपको रिकॉर्ड सारे कंप्लीट करने हैं. सिमिलर टाइप का ये प्रॉब्लम है कि 5 अकाउंट आपको दिए और आपको बोल रहे हैं कि ये इनकम्प्लीट है. ऑब्वियसली आप देखोगे तो ध्यान में आएगा कि पूरे नहीं है ये. तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है नहीं अकाउंट में वो ढूंढना है और आपको ये 5 अकाउंट कंप्लीट करने हैं. वी आर सपोज टू ड्रॉ दिस 5 अकाउंट्स. देखो कितने पेजेस छोड़े हुए सर ने. हाँ काफी है, काफी है. रॉ मटेरियल अकाउंट, रॉ मटेरियल अकाउंट.
work in progress account. Work in progress account. Next account is क्रेडिटर्स अकाउंट. वैसे क्रेडिटर्स अकाउंट अपन मेंटेन करते नहीं कॉस्ट रिकॉर्ड्स में, बट दिया हुआ है, उसका कुछ पर्पस है, क्यों दिया है आपको ध्यान में आएगा. परचेज की फिगर डायरेक्टली देने के बजाय क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिटर्स इंफॉर्मेशन वी विल बी अराइविंग एट परचेस ऑफ मटेरियल. देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अकाउंट. And one more account is finished goods account. Ready format? Correct start. Correct start. Yes. Raw material account, opening inventory is given. To balance brought down. What is the opening balance given? 32,000. WIP account, opening balance is given. To balance brought down. 9,200 rupees. No, 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 not closing. Finished goods produced during the year दिया है वो. Closing balance is not given. Credit side by finished goods. ड्यूरिंग द ईयर जितना WIP फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ वो फिगर है 1,51,000. करेक्ट. यू हैव फिनिश गुड्स अकाउंट. डेबिट साइड सेकेंड लाइन, ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए पहला लाइन ब्लैंक छोड़ो, फिर लिखो टू WIP अकाउंट 1,51,000. Creditors account, opening and closing balances are given. Creditors will have credit balance, buy balance brought down.
16,400 rupees. To balance carried down 19,200 rupees. Then manufacturing overheads. Amount spent is given. So to cost ledger control account. ₹29,600. Finished goods account. To balance brought down 24,000. Buy balance carried down. Buy balance carried down 30,000. Posting done. These were the transactions given in the problem which we posted. Additional information. The cash book showed that 89,200 have been paid to creditors for raw material. It is payment made to creditors 89,200. Creditors account to payment to creditors कितना दिया हुआ है? मैं जानबूझ के टू कैश और बैंक लिख नहीं रहा हूं कि तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि तो कल ही हमने डिस्कस किया है कि कैश बैंक ये अकाउंट ही मेंटेन नहीं होते, इवन क्रेडिटर्स का भी अकाउंट मेंटेन नहीं होता। ये प्रॉब्लम देने का पर्पज इतना ही है कि परचेस की फिगर अपने को ढूंढने आए। सो टू पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना है? 89,200। Ending inventory of WIP included material ₹5,000 on which 300 direct labor hours have been booked against wages and overheads. WIP में क्या क्या आता है? We had discussed this yesterday. Don't think about the solution or the account which we have drawn. In general, work in progress में क्या क्या ऐड करते हैं आप? Material, wages and overheads आते हैं, जिसमें दिया है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP इंक्लूडेड मटेरियल ₹5,000। तो जो क्लोजिंग WIP है उसमें मटेरियल 5,000 रुपए कंज्यूम हुआ है, on which 300 direct labor hours have been booked against wages and overheads. 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स उस पे काम किए हुए क्लोजिंग WIP पे। नीचे दिया जॉब कार्ड शोड दैट वर्कर्स हैव वर्कड फॉर 7,000 आवर्स, द वेज रेट इज ₹10 पर लेबर आवर। तो मेरे को बोलो क्लोजिंग WIP पे कितने घंटे कम हुआ है? 300 आवर्स पर आवर। ₹10 का वेजेस का रेट है, वेज रेट है। तो हाउ मच amount of wages you will charge to closing WIP? 300 into 10, 3,000. And what about overhead recovery rate? Fourth adjustment में दिया हुआ है ₹4 per direct hour है। How many labor hours worked on closing WIP? 300. So 300 into ₹4 overheads आएंगे, ऐसे कितना हो जाएगा वो? 1,200. So now tell me closing WIP कितना आएगा? क्लोजिंग WIP कितना आएगा? फिर से एक बार देखो, मटेरियल क्लियरली दिया हुआ है 5,000 रुपए, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है। लेबर वेजेस 300 आवर्स हैव बीन बुक्ड, 300 आवर्स इनटू ₹10 वेज रेट, सो ₹3,000 वेजेस के आ गए उसमें। एंड ओवरहेड रिकवरी रेट इज ₹4 पर आवर, सो 300 आवर्स वर्कड ऑन क्लोजिंग WIP into 4, it is ₹1,200. So closing WIP is going to be ₹9,200. Go to WIP account. Buy balance carried down। 1 मिनट रुको, स्क्रीन पे देखो।
स्क्रीन पे देखो सब लोग, मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूं। 5,000 तो है ही, प्लस 300 आवर्स इंटू ₹10 प्लस 300 आवर्स इंटू ₹4। समझ में आया? झेपा सबको? सो इट विल बी 9,200, करेक्ट? 9,200. ₹5,000 plus 300 hours into ₹10 plus 300 hours into 4. डन? हाँ, अब मेरे को बोलो टोटल लेबर आवर्स कितने हुए बोला है? 7,000 आवर्स। तो वेजेस कितने पे हुए? 70,000 पे हुए। यस, अभी ये नहीं हुए, वेजेस का अकाउंट बनाया क्या हमने? नहीं बनाया। ओवरहेड रिकवरी रेट इज ₹4 पर डायरेक्ट आवर। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का अकाउंट बनाया हुआ है। कितने लेबर आवर्स टोटल वर्क हुए? 7,000। तो 7,000 into 4, ₹28,000 wages, overheads will be absorbed. What will be the entry? WIP account debit to manufacturing overheads account by WIP account bracket 7,000 hours into ₹4, 28,000. 28,000. Go to WIP account to manufacturing overheads. $28,000. To wages. To wages. कितने आप सब करेंगे? 7,000 into 10. 7,000 hours into ₹10. It will be ₹70,000. आया? यस। अभी दी हुई इंफॉर्मेशन वैसे कंप्लीट हो गई, सारी हमने यूज कर ली। अब मेरे को बताओ, क्रेडिटर्स अकाउंट पहले क्लोज करना पड़ेगा। व्हाट विल यू गेट फ्रॉम क्रेडिटर्स अकाउंट? Purchases, raw material purchases by purchase of raw material, asterisk mark balancing figure. What entry do you pass for purchase of goods? Purchases account debit to creditors account. So creditors account credit side by purchase of raw material, asterisk mark balancing figure. 1,08,400 is the total. 92,400. Sorry, 92,000. आया? क्रेडिटर्स के अकाउंट में सिर्फ परचेज ढूंढने के लिए सारी इंफॉर्मेशन थी। अब आप मेरे को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स में परचेज की एंट्री बताओ। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। गो टू रॉ मटेरियल अकाउंट, रॉ मटेरियल मतलब स्टोर्स, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ब्रैकेट purchase of raw material. $92,000.
आया? अब देखते हैं आपको कितना टॉपिक समझ में आ रहा है। अब मेरे को बोलो, रॉ मटेरियल अकाउंट में कैन वी क्लोज दिस अकाउंट एट दिस एज? करेक्ट। व्हाई नो? एक फिगर मिसिंग होता है तो हम क्लोज कर सकते हैं बैलेंसिंग फिगर लेके। दो फिगर मिसिंग है। कौन से कौन से? एक तो डब्ल्यूआईपी को कितना ट्रांसफर किया, एंड क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है ना रॉ मटेरियल अकाउंट में, क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं। तो कैन यू क्लोज दिस अकाउंट एट दिस स्टेज? नहीं क्लोज कर सकते, तो पेंडिंग रखो। कम टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट। अब डब्ल्यूआईपी अकाउंट चेक करो, टेक योर ओन टाइम, क्या क्या रिकॉर्ड किया है देखो, इसमें क्या मिसिंग है ये बताओ। डब्ल्यूआईपी में क्या क्या आता है, सब से 2 बार डिस्कस हो गया। क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल आता है, वेजेस आते हैं एंड ओवरहेड्स आते हैं, जिसमें से वेजेस एंड ओवरहेड्स की फिगर तो है अपने पास। ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी है, एंड फिनिश्ड गुड्स कितने बन गए साल भर में वो भी है। तो यहां पे अपने को रॉ मटेरियल की फिगर मिल जाएगी ना। व्हाट इज द एंट्री फॉर मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर? डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल अकाउंट, स्टोर सेजर मतलब ही रॉ मटेरियल अकाउंट। तो यहाँ पे वो बैलेंसिंग फिगर अपने को मिलेगा टू, झेप रहा है क्या? टू रॉ मटेरियल्स अकाउंट, एंड यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टेरिस्क मार्क हियर। अब अगर ये नहीं देंगे ना, बाद में झेपेगा नहीं कि ये फिगर लाया कहां से सर ने। क्या बोल रहे? मुझे कॉल कर देंगे? नहीं, मेरी बहुत इच्छा है कि स्टडी रूम में मैं आपके बाजू में बैठा रहूं, आपको सब बताऊं, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। 1,60,200 बैलेंसिंग फिगर 53,000, correct? Go to raw material count by 53,000. Now can we close? And what will you get? Closing balance by balance carry down. Total is 1,24,071,000. चलो, रॉ मटेरियल क्लोज हो गया, डब्ल्यूआईपी क्लोज हो गया, क्रेडिटर्स क्लोज हो गया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनकर कितने हुए? 29,600। सब कितने हुए? 28,000। आपको बोला नहीं, अपने पास चॉइस है, या तो कैरी फॉरवर्ड करो या तो कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करो। क्या करूं? बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है तो ब्रैकेट में लिख दो अंडर एब्सॉर्ब्ड। अमाउंट इज 1,600 rupees. What is missing in finished goods account? By cost of sales. 175 total. 1,40,000. 1,45,000। तो हो गया इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कंप्लीट। चलो एक काम करते हैं, स्टडी लीव में मैं एक्चुअली आपके साथ बैठ नहीं सकता, बट आप अच्छे रीजन से मेरी याद करो स्टडी लीव में, ना कि मेरा उद्धार करो। वर्किंग नोट्स, एक वर्किंग नोट देता हूँ छोटा सा। जरूरत नहीं है वैसे वर्किंग नोट का, बट फिर भी दे देता हूँ। अरे बाप रे।
वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग WIP। इतना थैंक यू बोल रहे तो विनोद सर को बता देना भाई, अच्छा ठीक ठाक पढ़ाया है आदमी ने, तो थोड़ा सैलरी बढ़ा के दे दे कुछ, इस 3 लेक्चर का वगैरह ऐसे, ठीक है ना। हाँ, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, डरता हूँ मैं सर से बहुत, तो आप बता देना मेरे को। मटेरियल कॉस्ट कितना है? 5000। बहुत ही बुरा हाल है रे टैप के, है ना। 5000 wages, 300 hours have been booked na, and wage rate per hour is 10. So अरे देख, 3000 and ये ले, factory overheads, 300 hours into rupees 4, 1200 rupees total. Understood guys? प्रॉब्लम नंबर, भाई प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। प्रॉब्लम नंबर 5, फिफ्थ प्रॉब्लम। The following incomplete accounts are furnished to you for the month ended 31st October 2021. फिर से incomplete records है। Stores control account, WIP control account, finished goods control account, factory overheads control account, cost of goods sold, creditors for purchases, additional information. Factory overheads are applied by using a budgeted rate based on direct labor hours. The budgeted overheads for 2021 it should be, again it is printing error here, typo error. Budgeted overheads for 2006 print हुआ है, it should be 2021. The budgeted overheads for 2021 is 6,75,000 and the budget of direct labor hours is 4,50,000. So what will be factory overhead recovery rate guys? 6,75,000 के budgeted overheads है और budgeted hours 4.5 लाख रुपए, 1.5 per hour, 6,75,000 divided by 4,50,000. So factory overhead recovery rate will be 1.5 per hour. अपन ये working note बना लेंगे. The closing balance in the account of creditors for purchases is 15,000 and payments made to the creditors in October amounts to 1,05,000. Okay. Finished goods inventory as on 31st October is 66,000. Cost of goods sold during the month 1,95,000. On 31st October 2021, there was only one unfinished job in the factory. This is closing WIP. The cost record shows that rupees 3,1,200 direct labor hours of direct labor cost and 6,000 of direct material cost had been charged. Okay. Total of 28,200 direct labor hours were worked in October 2021. All factory workers earn same rate of pay. All actual factory rates incurred in October 2021 have been posted. You are required to complete the above accounts. आई थिंक सिमिलर टाइप का ही प्रॉब्लम है जो अभी हमने सॉल्व किया, सिर्फ फर्क इतना है कि पिछले प्रॉब्लम में वेज रेट 10 रुपए था ना, एंड ओवर रिकवरी रेट वो रेडीमेड दिया था, वो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इंफॉर्मेशन दी हुई है, सिर्फ वो कैलकुलेशन दिखाना है अलग से, बाकी सिमिलर ही प्रॉब्लम है। लेट्स क्विकली कंप्लीट। इसको कितनी जगह छोड़ी हुई है? 3 पेजेस से।
हाँ, तो वर्किंग नोट भी बनानी है ना। चलो, अकाउंट्स टू बी ड्रॉन आर 6, बनाओ। स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट, देन फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट मतलब ही कॉस्ट ऑफ सेल्स, creditors for purchases account, creditors for purchases account, करे स्टार्ट। यस गाइस, शैल वी स्टार्ट। आप लोग भी बोल सकते हो, बहुत शांत रहते हो यार, एकदम सिंसियर हो। हाँ,
Ready your format? Yes. Stores control account. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कंपल्सरीली डेबिट बैलेंस ही रहेगा इसमें. स्टॉक कांट बी नेगेटिव. 54,000. WIP control account. To balance brought down. To balance brought down 6,000. Then finished goods control account. To balance brought down 75,000. Factory overheads. टोटल डेबिट्स ड्यूरिंग द मंथ है ना, तो टोटल पेमेंट है बेसिकली डेबिट बोल तो. टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 45,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरा ही ब्लैंक है, इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दिया हुआ है. कीप इट ब्लैंक. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000. Buy balance brought down 30,000. Additional information. Factory overheads are applied by using a budgeted rate based on direct labor hours. The budgeted overheads for 2006 is 6,75,000 and budget for direct labor hours is 4,50,000. Working notes. Number 1. Ascertainment of factory overheads recovery rate. Ascertainment of factory overheads recovery rate. लिखो फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवरी रेट इज इक्वल टू budgeted overheads divided by budgeted hours. Budgeted overheads are 675,000 divided by 4,50,000 hours. 1.5 per hour. Correct? लिखा. The closing balance in account of creditors for purchases is 15,000 and payments made to creditors in October amounts to 1,05,000. Go to creditors account.
To balance carried down, debit side last line before total 15,000 and two payments during the month. Payments during October 2021, bolo 1,05,000. Then finished goods inventory as on 31st October was 66,000. Finished goods account by balance carried down. $66,000. Cost of goods sold during the month was 1,95,000. Entry for cost of sales. Cost of sales account with to finished goods account. During the month जो goods बेचे गए उसका cost है. तो finished goods account credit side by cost of goods sold account. $1,95,000. Go to cost of goods sold account to finished goods control account 1,95,000. On 31st October 2021, there was only one unfinished job in the factory. Closing WIP, unfinished job matlab. The cost records show that rupees 3,1,200 direct labor hours of direct labor cost and 6,000 of direct material cost have been charged. बेटा इस पे से अपने को wage rate मिल जाएगा. On the basis of this data, we will get wage rate. Working note 2. Calculation of wage rate per hour. On the basis of data of closing WIP, wage rate is equal to direct labor cost divided by direct labor hours. So direct labor cost कितना दिया है? 3,000 है divided by 1,200 hours. So that comes to rupees 2.5 per hour. आया सबका? Everybody understood? करना है तो छोटा सा वर्किंग नोट क्लोजिंग WIP का फिर से कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन भी दिखा सकते हैं, कर लेते हैं ना वर्किंग नोट.
valuation of closing WIP. Right hand side corner, rupees. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना दिया है, उसी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, 6000 है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, if you want you may show a calculation in bracket, 1200 hours into 2.5 जो ऊपर कैलकुलेशन किया ना हमने, it is 3000, and then factory overheads, $1200 into rupees, ऊपर ऊपर ये तो फर्स्ट वर्किंग नोट में है 1.5 पर आवर, बोलो 1800, टोटल 10,800 आया, 10,800 rupees. Go to WIP account, buy balance, carry it down, bracket, refer working note number 3, ₹10,800. Total of 28,200 direct labor hours were worked in October 2021. All factory workers earn same rate of pay. 28,200 डायरेक्ट लेबर आवर्स का काम हुआ है, एंट्री बताओ, वेजेस का एंट्री, पेमेंट का, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस अकाउंट दिया था क्या? नहीं दिया था, बट देन दैट विल बी टेकन इन WIP, WIP में वेजेस चार्ज होंगे, टू वेजेस, $28,200 hours into रुपीज पर आवर, कितना पेमेंट कर रहे हैं आप? 2.5, बोलो 70,500 rupees, correct? What is the entry for absorption of factory overheads over WIP? WIP account debit to factory overheads account. WIP account debit side to factory overheads. वो रिकवरी रेट भी निकाला है हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स का, 28,200 hours into rupees 1.5, बोलो 42,300, करेक्ट? फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट है शायद, हाँ, बाय 43,200 ना, sorry 42,300. Got it, guys? Given information is over. Let's close the accounts one by one. First of all, you need to close compulsorily creditors for purchases so that you will get purchase of raw material. By purchase of raw material, by purchase of raw materials, asterisk mark balancing figure.
Total is 1,20,000. Balancing figure will be 90,000. Where will you take it? To cost ledger control. Bracket purchase of 90,000. Purchase of raw materials 90,000. आया? अभी अपन सेम वी आर लैंडिंग इन द सेम पोजीशन वेयर वी लैंडेड इन लास्ट प्रॉब्लम ऑल्सो. अब अगर स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट देखो तो दो फिगर मिसिंग है, कंजम्पशन एंड क्लोजिंग बैलेंस. यू कांट क्लोज. डब्ल्यूआईपी अकाउंट में आओ. प्रॉब्लम ये है कि डब्ल्यूआईपी अकाउंट में भी अभी दो फिगर्स मिसिंग है. यस, फिनिश गुड्स का बैलेंस नहीं है कितना, और रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी नहीं है. कोई बात नहीं, अगले अकाउंट में आओ. फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में आओ. क्या मिसिंग है? ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, एंड जो बेची है वो वैल्यू दी हुई है. सो फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर विल बी मिसिंग. व्हाट विल बी द एंट्री? फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट. टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट asterisk mark balancing figure. Total is 2,61,000. Balancing figure. Everybody understood, guys? Take it in WIP account. Buy finished goods. अरे 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 अरे, क्या हो रहा है रे? Buy buy finished goods account. $1,86,000. Now can we close WIP? And what will be missing in that? Raw material consumption. To stores control account asterisk mark. Total is 196. Balancing figure 78,000. Stores control account by WIP 78. Can we close now stores? What will be missing? Closing balance. Buy balance carried down. $1,44,000. 56, 66,000. आया? अगला अकाउंट फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्सॉर्ब्ड है. क्या करे? क्या करूं? कैरी फॉरवर्ड करूं? मंथली है नहीं है? दोनों चॉइस है. मंथली है, मंथली है तो ज्यादा लॉजिकली है कि इट इज कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ, और यू कैन टेक इट टू कॉस्टिंग P&L. कोई प्रॉब्लम नहीं. बोला है? कहाँ कहाँ बोला है? All actual factory rates incurred in October 2021 have been posted. तो ये इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कॉस्टिंग P&L में पोस्टेबल तो सारे खर्चे जो हुए वो दिए प्रॉब्लम में, उतने खर्चे है, ऐसा मतलब है.
कैरी फॉरवर्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करने का है बोलो। 45,000। व्हाट इज द बैलेंस? नोट लिख दो एक नीचे, छोटा सा नोट लिख दो एक नीचे तुरंत। नोट, अंडर एब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, under absorbed factory overheads are carried forward to next month, are carried forward to next month. Alternatively, आगे बहुत जगह है ना बेटा, तो इतना इसमें वैसे वहीं के वहीं लिख रहा है, दो अकाउंट के बीच में बहुत जगह है आगे अपने पास। कोई बात नहीं, अब आप अब वहीं कंटिन्यू कर। ऑल्टरनेटिवली it may be charged to costing profit and loss account. Alternatively, it may be charged to costing profit and loss account. और एक कौन सा अकाउंट है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोज इट, ट्रांसफर द बैलेंस टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,95,000। $1,95,000। डन? यस, ब्रेक लेने वाले अपन, बट अगले प्रॉब्लम का फॉर्मेट बनाने के बाद। मैं चॉइस थोड़ी दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। वी विल हैव ब्रेक बट आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर्मेट ऑफ नेक्स्ट सम। लास्ट सम है नॉन इंटीग्रेटेड का, देन वी विल बी एंटरिंग इनटू इंटीग्रेटेड। सिक्स्थ सम क्विकली फॉर्मेट बनाते फिर ब्रेक लेते। A company operates on historic job cost accounting system which is not integrated with financial accounts. At the beginning of a month, the opening balances in cost ledger were stores ledger control account, WIP control account, finished goods account, building construction account. Guys, this is capital WIP. Cost ledger control account. During the month, following transactions took place: material purchased, issued to production, issued to general maintenance, issued to factory construction, building construction. Wages, gross wages paid, indirect wages for building construction. Work overhead, actual amount incurred, absorbed in building construction, under absorbed. Royalty paid on production, selling, distribution, administration overhead, sales. At the end of the month, the stock of raw material and work in progress was 55 lakhs and 25 lakhs respectively. The loss arising in raw material account is treated as factory overheads. इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ। The loss arising in raw material account is treated as factory overheads. कल समझाया था मैंने। Normal loss. It is normal loss. अगर factory overheads treat कर रहे तो वो क्या है? Normal loss है। अगर abnormal रहेगा तो it goes to costing profit and loss account. याद आ रहा क्या कल समझाया हुआ entries के time? Building under construction was completed during the month. Company's gross profit margin is 20% on sales. Prepare relevant accounts to record the above transactions in the cost ledger of the कंपनी। चलो लिखो। इन बुक्स ऑफ द कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स under that stores ledger control count.
Stores ledger control account. पांच पांच छह लाइन के अकाउंट बनाओ. WIP control account. Finished goods account. Finished goods account. Building construction account. Wages account. Wages account. Factory overheads या works overheads account. Factory overheads account. Selling distribution and administration overheads account. Combine दिया है problem में. Selling distribution and administration overheads account. Cost of sales account. Sales account. Costing profit and loss account. And then finally, cost ledger control account. Cost ledger control account. फिर से एक बार रिपीट करूँ क्या? Stores control account, then WIP control account, then finished goods control account, building construction control account, wages account, factory overheads account, selling distribution and administration overheads account, cost of sales account, sales account, costing P&L account, cost ledger control account.
cost ledger control account. Keep the format ready, guys, and take a break of 15 minutes. Come back in 15 minutes. Okay? Yes.
Yes, guys, let's resume the class. Recording resume केलं ना? Recording. So, guys, we are about to complete the non-integrated system. It is the last problem on non-integrated system, sixth one. टोटल 6 प्रॉब्लम थे, पहले 5 हम क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, सिक्स्थ भी हम सॉल्व कर रहे हैं. Let's complete this problem so that we can go to integrated system, which is, as I told in the morning also when we started, that it is a formality. After studying non-integrated, integrated becomes formality. It is very simple and very easy. Let's complete this 6 sum first. All of you is ready with format? Yes. So directly I'll start with the solution. Yes. A company operates on historic job cost accounting system which is not integrated with the financial accounts. At the beginning of the month, the following the opening balances in cost ledger were: stores ledger control account 80 lakhs. एक काम करो, सिर्फ ऊपर ही यहाँ पे स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया ना, वहीं पे ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में लिख दो रुपीज इन लैक्स. Rupees in lakhs. To balance brought down 80. WIP account. To balance brought down 20. Finished goods. To balance brought down 430. Building construction account. To balance brought down 10. Cost ledger control account. No need to say, obviously it will have credit balance. Buy balance brought down 540 rupees. During the month, following transactions took place. Material purchased entry. Stores ledger control account debit to cost ledger control account. Go to stores ledger control account debit side. Cost ledger control account 40. Go to cost ledger control account by stores ledger control account. Issue to production 50. Entry WIP account debit to stores ledger control account. Go to WIP account. To stores ledger control account 50.
stores ledger control account by WIP control account 50. बरोबर. Issued to general maintenance. Where do you charge? Factory overheads. Credit side of stores ledger control account by factory overheads. कितना है? 6 lakhs. Factory overheads debit side to stores ledger control account 6. Issued to building construction, it will be debited to capital WIP account. Entry. Building construction account debit to stores ledger control account. Debit side of building construction to store ledger control account 4. Stores ledger control account by building construction बोलो 4. Wages. What is the entry for wages paid? Wages to store cost ledger control account. To cost ledger control account 150. Indirect wages 40. Entry. Factory overheads account debit to wages account by factory overheads. Bracket indirect wages कितने? 4040 rupees. Factory overheads debit side to wages account 40. For building construction 10. बोलो. Building construction account debit to wages account. Wages account credit side by $10. You have building construction account debit side to wages account 10. Works overheads actual amount incurred 160. Entry. Factory overheads account debit to cost ledger control account. $160. Cost ledger control account by wages. कितने wages पे किए हमने? 150 by factory overheads 160. Absorbed in building construction. Works overheads absorbed in building construction.
What will be the entry for that? Building construction account debit to factory overheads account. Go to factory overheads account by 20. Building construction to factory overheads 20. अंडर absorbed 8 है 8 डायरेक्टली दे दिया है कितना अंडर absorbed है. Go to factory overheads account by costing P and L account. ओपनिंग में कैरिड फॉरवर्ड नहीं है ना. By costing profit and loss account 8. Go to costing P and L account to eight to factory overheads 8. Then royalties paid on production. Obviously it is factory overheads. Royalties direct expenditure, factory overheads entry. Factory overheads account debit to cost ledger control account. To cost ledger control account bracket royalty. Amount is 5. Cost ledger control account by factory overheads 5. Selling, distribution and administration overheads paid entry. Selling, distribution and administration overheads account debit to cost ledger control account. To cost ledger control account 25. Go to cost ledger control account by selling, distribution and administration overheads. $25 lakhs. Sales 450 entry will be cost ledger control account debit to sales account. So to sales account 450. You have sales account by cost ledger control account 450. बरोबर. At the end of the month, stock of raw material and work in progress was 55 lakhs and 25 lakhs respectively. Go to stores control account by balance carried down 55 lakhs. WIP
by balance carried down, $25. Correct? Loss arising in the raw materials account is treated as factory overheads, means it is to be treated as normal loss. For normal loss, what entry we have studied? फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. अगर आप स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में देखो तो ओपनिंग बैलेंस आ चुका है, फिर जितना परचेस हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो आ चुका है, फैक्ट्री ओवरहेड्स को जितना चार्ज किया वो हम ले चुके हैं, डब्ल्यूआईपी में गया वो भी आ गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी आ गया. तो अब इसमें जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा, दैट बैलेंसिंग फिगर इज गोइंग टू बी नॉर्मल लॉस. सो बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स asterisk mark balancing figure bracket normal loss. एसी का रिमोट कहाँ बेटा? यहाँ का एसी बंद कर दिया क्या आपने? क्या टेम्परेचर बढ़ा दिया? वो दे तो रिमोट मेरे को. इतने स्टूडेंट बैठने के बाद गर्म ही होगा ना रे एसी. अगर टेम्परेचर 28, बाप रे. कल भी बोला ना रे मैंने, नहीं समझ में आता हाथ नहीं लगाना बेटा. बोलो कितना आया? 120 इज द टोटल. 5 लाख का नॉर्मल लॉस है, ब्रैकेट में लिखो नॉर्मल लॉस. लिखा? गो टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. The building under construction was completed during the month. कंप्लीट हो गया है बिल्डिंग. तो जो फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन अकाउंट है उसमें जो बैलेंस है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बिल्डिंग. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में फॉरगेट अबाउट दिस कॉस्ट रिकॉर्ड्स. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या एंट्री करोगे आप? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट. But because we don't have building account under this system, it will be transferred to cost ledger control account by cost ledger control account. Total is 44. Go to cost ledger control account to building construction. $44. To building construction 44. आया? Then it is written company gross profit margin is 20% on sales. कंपनी का जीपी रेशियो 20% ऑन सेल्स है. सेल्स 450 दिया हुआ है, लेस 20%. प्रॉफिट 20% है, so 450 लेस 20%. 360 should be cost of goods sold. Cost of sales must be 360. What is the entry for cost of sales? Cost of sales account debit to finished goods account. करेक्ट है, बराबर है. बोलो cost of sales account debit side to finished goods account bracket 450 minus GP at the rate of 20%. बोलो 360. Go to finished goods account. By cost of sales 360
दैट्स इट, दी हुई इंफॉर्मेशन पूरी हो गई. वी नीड टू क्लोज द अकाउंट्स. पहला अकाउंट है स्टोर्स लेजर कंट्रोल, जो ऑटोमेटिकली अभी कंप्लीट हो चुका है अपना. हमने नॉर्मल लॉस ले लिया बैलेंसिंग फिगर उसमें. डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी में क्या मिसिंग है? अभी डब्ल्यूआईपी में तो बहुत कुछ मिसिंग है, बहुत कुछ मिसिंग है. अभी क्लोज नहीं हो सकता डब्ल्यूआईपी कंट्रोल. वेट, फिनिश गुड्स, वेट, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर अभी बाकी है ना, तो वो भी क्लोज नहीं हो सकता. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया. वेजेस अकाउंट, अभी मेरे को बताओ ड्यूरिंग द ईयर वेजेस इनकर कितने हुए, पे कितने हुए? 150, जिसमें से फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट वेजेस गए 40, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन गए 10, तो बचे हुए 100. ये डायरेक्ट लेबर है. एंट्री WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट बाय ब्रैकेट डायरेक्ट वेजेस asterisk mark balancing figure. Total is 150, balancing figure is 100. WIP account to wages account 100, correct? Are you getting this? Next account is factory overheads. As far as factory overheads are concerned, जो पे हुए वो सब आ गए. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को जितना चार्ज करना है वो भी आ गया, और अंडर एब्सॉर्ब की फिगर भी प्रॉब्लम में दी हुई थी. तो अब क्या मिसिंग है? फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड, राइट, जो डब्ल्यूआईपी में चार्ज होता है. तो क्या एंट्री होगी उसकी? फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू डब्ल्यूआईपी, एनडी. डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट बाय WIP account asterisk mark balancing figure. 216 is the total. 188 is the balancing figure. Go to WIP account. Two factory overheads. 188 आया. Next account is selling, distribution and administration overhead. These are absorbed over cost of sales. By cost of sales asterisk mark balancing figure without cash sheet is 25. 25. हर चीज की पार्टी है यहाँ पे. छोटी छोटी बातों में क्या बात है, सीखना चाहिए आप लोगों से. सुशील इंसान सुशील बच्चों में आ गया फिर है. फिर पार्टी रे. टू सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बोलो 25 आया. नेक्स्ट अकाउंट सब लोग WIP कंट्रोल अकाउंट में. WIP आ गए. ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तो प्रॉब्लम में दिया हुआ था. मटेरियल इशूड आ गया, वेजेस आ गए, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया. अब मेरे को बोलो क्या मिसिंग है इसमें? फिनिश गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, एंट्री फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट बाय finished goods account asterisk mark balancing figure. Total is 358
ट्रिपल नेल्सन फिगर. एनी आइडिया अबाउट इट? हाँ, मैंने बताया था क्लास में. क्रिकेट में एक बहुत महान अंपायर होके गए, डेथ हो गई उनके पीछे, डेविड शेफर्ड नाम के. डेविड शेफर्ड, वेरी वेरी पॉपुलर एंड फेमस अंपायर ही वाज. थोड़े हेल्दी थे ऐसे, हेल्थ में उनके. और इंग्लैंड में बेटा ट्रिपल वन, ट्रिपल टू, ट्रिपल थ्री, ट्रिपल फोर, ट्रिपल फाइव, दिस नंबर्स आर कॉल्ड एज नेल्सन नंबर्स. और वो इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में ये नंबर्स को अशुभ मानते, अनलकी नंबर्स मानते. अपने पास तो अपन ट्रिपल वन, ट्रिपल टू ये लकी नंबर, लकी बोलते अच्छा नंबर बोलते. बट इन ग्रेट ब्रिटेन दे कंसिडर इट एज अनलकी नंबर्स एंड दे कॉल इट एज नेल्सन फिगर्स. जब कभी क्रिकेट के ग्राउंड पे किसी भी टीम के लिए अगर अंपायरिंग कर रहे हैं, कोई भी टीम के बीच में मैच रहने दो, व्हेन द स्कोर यूज्ड टू बी ट्रिपल वन, ट्रिपल टू, ट्रिपल थ्री, ट्रिपल फोर, टेस्ट मैच है तो ट्रिपल फाइव भी होता था, तो ही यूज्ड टू जंप ऑन वन लेग, एक पैर ऐसा ऊपर करके जंप करते थे कि वो अनलकी मानते थे ग्रेट ब्रिटेन में. सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज नेल्सन फिगर्स, ट्रिपल थ्री. फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट साइड. क्या बोल रहे हैं? मैं डेविड शेफर्ड हूँ, ना मैं अंपायर हूँ, ना ये क्रिकेट का फील्ड है, और ना मैं ग्रेट ब्रिटेन से हूँ, है ना. और आप तो ऐसे इंसान को बोलते हो कि जो कभी मुहूर्त देखता ही नहीं है. मैं मुहूर्त भी नहीं मानता बेटा. टू WIP अकाउंट. हाँ, इसकी भी पार्टी बनती है. विनोद सर को बोलना पड़ेगा, पार्टी दे दो इन बच्चों को, है ना. और मुझे भी बुलाओ उस पार्टी में. पोहे में मान जाएंगे. अच्छा चलो मेरे को बताओ, फिनिश्ड गुड्स में क्या मिसिंग है? पोहे मिसिंग है. बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस. नाश्ता किए नहीं गए आज ब्रेक में? अरे बाप रे, वो डेंजर कमेंट आया है यहाँ पे. सर फेस टू फेस वाले भूखे हैं. 763. क्लोजिंग बैलेंस बताओ कितना आया? 403 रुपीज आया. आया. वेजेस अकाउंट टैली हो गया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट. 385. Costing P&L debit side to cost of sales, 385 rupees. Sales account to costing P&L, विथ केल से भी उतना ही आ रहा है, 450. Go to costing P&L by sales. कितना बेटा? 450. Yes. Costing P&L, close the account, transfer the profit to cost ledger control account.
बोलो बेटा 55.7 आया. By costing profit and loss account 57, close cost ledger control account, get a closing balance. Total is 977 483 483. क्रॉस चेक करके देख सकते हैं आंसर. लो एलसी पे मैं बोलता हूं 55 क्लोजिंग बैलेंस इन रॉ मटेरियल प्लस 25 इन WIP एंड प्लस फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना था 403. कितना है टोटल 483. गॉट इट गाइस. ट्रायल बैलेंस बोला नहीं है मैं तो बना लो फिर. बना लो ना. है ना बेटा कितने 4 लाइन लगने हैं. बनाओ बनाओ बनाओ. 4 लाइन ही लगे. अरे कर लो ना एडजस्ट. क्या प्रॉब्लम है. जगह है ना भाई. सिर्फ स्टडी करोगे तब अच्छे रीजन से मेरी याद करोगे. रेडी. बोलो बेटा स्टोर्स लेजर 55 WIP 25 finished goods 403 cost ledger control account 483. Tally figure 483. $483. Done. Everybody done? With this, we finish with non-integrated system, where financial records and cost records are maintained separately, and we do not have general accounts which we normally do not require in cost records like cash account, bank account, debtors, creditors, fixed asset account, capital account. We do not prepare these accounts. Instead of these accounts, we prepare one single account, cost ledger, control account, and effects are recorded in that account. अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई अपनी. 6 के 6 प्रॉब्लम्स क्लास में सॉल्व हो चुके हैं पूरे डिटेल में. तो आई एम श्योर दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट. So now let's go to the second system which we have is integrated. If you recall
what we discussed yesterday, then integrated में we have combined records, right? combined records है, और combined records है तो उस वजह से वहां पे combined profitability आएगा. combined profitability आएगा तो वहां reconciliation का सवाल ही नहीं आता. Anyway reconciliation को अभी तक मैं गया ही नहीं हूँ. reconciliation सीखने का टाइम कल आएगा. In tomorrow's lecture we will be talking about reconciliation, where we will be preparing not just P&L account as per financial account, but we will also prepare cost sheet. तो बाय चांस अगर कॉस्ट शीट याद नहीं आता है तो आज के लिए होमवर्क समझो, कॉस्ट शीट रिवाइज करके आना है, क्योंकि तो टुमारो प्रैक्टिकली वी नीड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी अपने को. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स. फिर कल ये एकदम ऐसा क्वेश्चन मार्क लेके चले मत बनाना कि ओपनिंग WIP कहाँ ऐड हो रहा है, कहाँ क्लोजिंग WIP लेस हो रहा है, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक कहाँ एडजस्ट हो रहा है. ये कुछ बच्चे देखते फिर वो ऐसे आपण अन्ना पायलट का चेहरा बना के. तो आज थोड़ा रिवाइज कर लो कॉस्ट शीट. तो टुमारो वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट का प्रॉफिट आएगा वो अलग, एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का P&L अकाउंट बनाएंगे उसका प्रॉफिट अलग, और फिर उन दोनों को अपन रिकंसाइल करेंगे. But that part we will discuss tomorrow. Let's understand now integrated system जो कल हम बात करते हैं, where financial records and cost records are maintained in combined manner. combined तरीके से maintain होते हैं. कुछ नहीं बेटा, बाकी सब कुछ तो as it is अपनी जगह है. as it is सब कुछ अपनी अपनी जगह ही जो अभी तक सीखा पिछले 6 प्रॉब्लम में वही है. सिर्फ अब मैं यहाँ पे कैश अकाउंट बनाऊंगा, बैंक अकाउंट बनाऊंगा, डेटर्स का अकाउंट होगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा. ऑब्वियसली फिक्स एसेट अगर है तो फिक्स एसेट का अकाउंट बनेगा, क्यों तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो सारे अकाउंट बनते हैं. तो कंबाइंड अगर आप करोगे तो उसमें ये सारे अकाउंट आप बनाओगे. एंड इंस्टेड ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी विल बी प्रिपेयरिंग जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब सिर्फ कॉस्टिंग P&L नहीं बोल सकते हम, क्यों तो बाकी के भी कुछ खर्चे अगर प्रॉब्लम में दिए तो वो भी आने वाले हैं. जैसे इंटरेस्ट पेड अगर अभी ये पहले 6 समय कहीं आता, दिया नहीं था वैसे, बट अगर आता तो आप लेते क्या उसको? हम अकाउंट फॉर नहीं करते उसको. तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में इंटरेस्ट ये फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर बोल के इग्नोर किया जाता है, वी डू नॉट कंसिडर इट. बट अब अगर कंबाइंड मैनर में रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे तो जाहिर सी बात है यार, इंटरेस्ट भी आएगा, एडवर्टीजमेंट भी आएगा, बाकी खर्चे भी आएंगे, तो जो जो जरूरी है वो सारे अकाउंट बनेंगे. तो अब यहाँ पे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनेगा क्या? इंटीग्रेटेड सिस्टम में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनेगा क्या? जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना. डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए नॉन इंटीग्रेटेड में हमने वो अकाउंट बनाया था. अब तो इंटीग्रेटेड में सारे अकाउंट बनने वाले हैं, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई ऐसा कोई कॉन्ट्रा अकाउंट अलग से बनाओ. सो यू विल बी हैविंग कैश, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सारे अकाउंट बनने वाले हैं. So there is no need of any control account like cost or general ledger control account which we prepared. उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. Let's quickly go through the journal entries जो मटेरियल के स्टार्ट में आपके इस टॉपिक के दिए हुए. So come to that part. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज का. ऐसे नहीं भी बताया तो भी आप करेक्ट ही देने वाले एंट्रीज, बट स्टिल लेट्स गो थ्रू इट वंस. एक बार गो थ्रू कर लेते. इंटीग्रेटेड सिस्टम के अकाउंटिंग एंट्रीज. कम टू पेज नंबर 948. और मुझे नहीं लगता बेटा देख के बोलने की जरूरत है, आपको सब आता है. अभी ये फटाफट एंट्रीज बताओ सो दैट वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन दैट. परचेस ऑफ मटेरियल, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट इफ इट इज कैश परचेस, बट इफ इट इज क्रेडिट परचेस टू क्रेडिटर्स अकाउंट. परचेस ऑफ मटेरियल फॉर डायरेक्ट यूज इन जॉब और प्रोसेस, WIP account debit to cash or bank or creditors as the case may be. Purchase of material for immediate repairing work, factory overheads account debit to cash or bank account or creditors account. Return of materials to suppliers, creditors return cash account debit कैसे होगा? Creditors account debit to stores ledger control account. अब ध्यान से सुनो, नॉर्मली रिटर्न ट्रांजैक्शन जो होते हैं ना, दोज आर अगेंस्ट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ओनली. यूजुअली नॉर्मली ऐसा कोई लिखित में रूल नहीं है राइटिंग में कहीं, बट नॉर्मली वी सी दैट ओनली गुड्स परचेस्ड एंड सोल्ड ऑन क्रेडिट आर रिटर्न्ड. रिटर्न उसी के केस में पॉसिबल होता है. आप देखो ना, रिटेल में जाके आप कुछ खरीदते हो
तो रिटेल में नॉर्मली रिटर्न कुछ नहीं होता। आप डी मार्ट में जाके कुछ खरीद के लाए तो आप रिटर्न कर सकते क्या? या कहीं पे भी कोई भी रिटेल शॉप में जाओ, आप देखोगे कि इनवॉइस पे लिखा हुआ होता है की गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड बॅक, विल नॉट बी टेकन बॅक. एकदा विकलेला माल परत घेतला जाणार नाही. So point is, usually we see usually that return transactions are against credit transactions. बट अगर समझो किसी प्रॉब्लम में क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ही नहीं और कैश परचेस ही हुआ है और रिटर्न दिया है, तो दैट विल बी ऑब्वियसली इन कैश. तो लिखते हो तो एंट्री इसलिए ऐसी लिखी हुई है यहाँ पे, क्रेडिटर्स और कैश अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. पेमेंट टू क्रेडिटर्स नॉन इंटीग्रेटेड में एंट्री नहीं हुई, ये तो अकाउंट ही नहीं थे, ना क्रेडिटर्स का था ना कैश बैंक था, और अभी तो दोनों अकाउंट है, एंट्री पास करनी पड़ेगी. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, सेम एंट्री. WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. इश्यू ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, कैपिटल WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. इश्यू ऑफ मटेरियल फॉर सर्विस ऑर्डर ऑफ कस्टमर, service order account debit to stores ledger control account. Indirect material issued to factory floor, factory shop, factory overheads account debit to stores ledger control account. Return of direct material to stores, source ledger control account debit to WIP account, because when you supplied, you debited WIP account. If goods are returned back from machine floor to the ground to the stores department, the entry will be stores ledger control account debit to WIP account. Return of indirect material, where did you charge the indirect material? Factory overheads, so reversal will happen in factory overheads only. The entry will be stores ledger control account debit to factory overheads account. Normal loss of material, same entry. Factory overheads account debit to stores ledger control account. Abnormal loss of material, instead of costing P&L, now we don't have costing P&L. It is profit and loss account. Entry will be profit and loss account debit to stores ledger control account. Payment of wages, wages account debit to cash or bank account. Payment of expenses, factory overheads account debit to cash or bank account. Depreciation on plant and machinery, factory overheads account debit to plant and machinery account. Very good. To plant and machinery account. अब अकाउंट आएगा ना, नॉन इंटीग्रेटेड था तो हमने वो कॉस्ट लेजर में लिया था, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट था नहीं, अब यहाँ पे अकाउंट है. सो फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. एब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेम एंट्री. वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट. भूलना नहीं है. वेयर डू यू एब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स? WIP. The entry will be WIP account debit to factory overheads account. Charging of overheads to service order of the customer, service order account debit to factory overheads account. Charging overheads to capital asset, capital WIP account debit to factory overheads account. Transfer of manufactured goods, during the year goods produced, WIP से finished goods, finished goods account debit to WIP account. Administration expenses incurred, administration overheads account debit to cash or bank account. Absorption of administration overheads, administration overheads are absorbed over finished goods. Entry will be finished goods account debit to administration overheads account. Next entry is for cost of goods sold, same entry. Cost of sales account debit to finished goods account. Selling and distribution expenses overheads incurred, entry. Selling and distribution overheads account debit to cash or bank account. Absorb these expenses. Cost of sales account debit to selling and distribution overheads account. Sale of goods, cash or bank account debit to सेल्स अकाउंट. और अगर क्रेडिट सेल है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. एक एंट्री यहां लिखी नहीं है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. व्हाट विल बी द एंट्री? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट.
Transfer of cost of sales costing to P&L account, not costing P&L account, to P&L account. Profit and loss account debit to cost of sales account. Transfer the sales to P&L. Sales account debit to profit and loss account. सारे एंट्री सेम है बेटा, सिर्फ जहां पे कॉस्टिंग P&L मैंने बोला उसकी जगह अभी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल रहे क्योंकि कंबाइंड रिकॉर्ड्स है. अंडर एब्सॉर्प्शन है तो डेबिटेड टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स. अगर ओवर एब्सॉर्प्शन है तो रिवर्स द एंट्री. ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क. फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल WIP अकाउंट. अभी जो पिछला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट था, अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो वी कन्वर्टेड इट इनटू बिल्डिंग. नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम था तो बिल्डिंग अकाउंट था नहीं, इसलिए कॉस्ट लेजर में डेबिट किया था. बट यहाँ पे तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट रहने वाला है, तो व्हाट विल बी द एंट्री? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल WIP अकाउंट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, लास्ट एंट्री. Now under integrated system we will have capital account. Entry will be profit and loss account debit to owner's capital account. Any problem? एकदम बेसिक है, सिंपल है, राइट. अब वापिस एक बार बोल रहा हूँ, 5-6 बार बोल चुका हूँ कि पहले 6 प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद अब ये कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी टू कंप्लीट 11 स्टैंडर्ड के एंट्रीज है ये सारे जो आपने को सिर्फ लिखने हैं. कम टू पेज नंबर, आज एक सम कंप्लीट कर लेंगे. 3 सम है टोटल, इसमें का एक सम तो आप होमवर्क कर लो भाई. 7 नंबर शायद सिर्फ ट्रांजैक्शन जो भी मैंने समझाया ना, सिर्फ ट्रांजैक्शंस लिखिए, उसके एंट्रीज लिखने को बोले हैं, तो उतना तो आप कर लोगे. ये देखो ये 7 जो है ना, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वेस्टेड टू पास जर्नल एंट्रीज, ये कर लोगे इतना सा पार्ट. अभी जो बोले वही एंट्रीज है सारे, तो इतना पार्ट सिर्फ होमवर्क कर लो. लेट्स सॉल्व 8 सम. 8 दोनों में से छोटा सम कौन सा? 8 9th में से 8 ही छोटा है, अभी कंप्लीट हो जाएगा. 8 9th कल करेंगे. नहीं बट 10th रिकंसिलिएशन है, वो दिखाया नहीं ना अभी. नहीं करते हैं ना कंप्लीट, फिर जाते हैं. कल वैसे भी कल का लेक्चर है ही ना अपने पास. कल का लेक्चर से आधे में कंप्लीट करूंगा तो फिर कल का पेमेंट नहीं मिलेगा ना मेरे को. हाँ, कल का भी तो लेक्चर पूरा लेना पड़ेगा ना. क्वेश्चन नंबर 8. In the absence of chief accountant, you have been asked to prepare a month's cost sheet, cost accounts for the company which operates a batch costing system fully integrated with financial accounts. Underline. Fully integrated with financial account. Following relevant information is provided to you. Balance at the beginning of the month, stores ledger control account, work in progress control account, finished goods control account, prepaid production overheads brought forward from previous month. Prepaid expenses है. Prepaid है मतलब ये under absorbed है. Transaction during the month, material purchase, material issued to production, to factory maintenance, material transferred between the batches, wages paid to direct workers, to indirect workers, direct wages charged to batches, recorded non-productive time of direct workers, selling and distribution overheads incurred, other production overheads incurred, sales, cost of finished goods sold, cost of finished goods completed and transferred, physical value of WIP at the end of the month. Production overheads absorption rate is 150% of direct wages charged to work in progress. Required to prepare following accounts for the month: stores ledger control account, WIP control account, finished goods control account, production overheads control account, profit and loss account. बोले तो इतने ही अकाउंट है लेकिन बनाएंगे सब अपन. लिखो. In the books of dash dash, how many pages are there? Blank pages. 3.5 है ना? In the books of dash dash,
Stores ledger control account. Six lines. WIP control account. Finished goods control account. Production overhead. Production overheads control account. Then selling and distribution overheads. Selling and distribution overheads account. वेजेस का बना दिया क्या अपन ने अकाउंट? नहीं नहीं बना है. वेजेस कंट्रोल अकाउंट. Wages control account. Cost of sales account. Sales account. And profit and loss account. Now account total 9. Stores ledger control account.
WIP control account, finished goods control account, production overheads, selling and distribution overheads, wages, cost of sales, profit and loss account. Then बनाओ आराम से बनाओ, कोई गड़बड़ नहीं. कौन सा? Stores ledger control, WIP control account, finished goods control account, production overheads control account, selling and distribution overheads, wages, cost of sales, P&L. किसका फोन कनेक्ट किया है भाई? संवेद कौन है? तो ये कर देना, डिस्कनेक्ट करना. हाँ, क्या क्या? नहीं, मुझे टेंशन नहीं है. तेरा मोबाइल यहाँ चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. Can I start? Yes, guys. In the absence of chief accountant, you have been asked to prepare a month's cost accounts for a company. Yes, सुनाई दे दिया ना मुझे. Which operates a batch costing system fully integrated with financial accounts. Following relevant information is provided to you. Balance at the beginning. Stores ledger control account. To balance brought down. $25,000. WIP control account. To balance brought down. Finished goods control account. To balance brought down. $35,000. Prepaid production overheads brought forward from previous month. लास्ट मंथ में प्रीपेड थे, लास्ट मंथ में. अब थोड़ा अकाउंट्स में जाना पड़ेगा.
what entry do we pass for prepaid expenses at the end of the period? Prepaid expenses account debit to expenses account, and this month beginning, this period beginning, that closing entry of previous period is reversed. Expenses to prepaid expenses. ₹3,000. Then material purchased entry. Stores ledger control account debit to cash or bank account. $75,000. Material issue to production by WIP control account कितना? 30,000. WIP account debit side. $30,000. Issue to factory maintenance क्या करते हैं? By factory overheads. Stores ledger control credit side by factory overheads. 4,000. Factory overheads account. Production overheads, factory overheads, and the same. 2. Stores ledger control account. $4,000. Material transfers between batches. Will you record? Batch accounting नहीं कर रहे हैं ना, batch wise नहीं कर रहे. No entry. Wages paid to direct workers, to indirect workers. Total 30,000 है. पहले entry बोलो total payment की. Wages account debit to cash or bank account. Under that you may give bifurcation. Direct workers कितने? And रुको रुको गड़बड़ मत करो, एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, वेट. डायरेक्ट वेजेस चार्ज बैचेस. बैचेस को कितना चार्ज किया वो तो एक्चुअल में डब्ल्यूआईपी में कितना लिया गया? 20,000 है. जबकि डायरेक्ट वेजेस देते हो तो अपने को कितने दिए पे किए बोल के? पे कितने किए तुमने? 25,000. बट चार्ज टू बैचेस वो तो प्रोडक्शन को कितना चार्ज किया? 20,000 ही चार्ज किया है. क्यों? तो उसका नीचे दिया है recorded non-productive time of direct workers. Non-productive time of direct workers 5,000 है. मतलब क्या? तो 25,000 रुपए का डायरेक्ट लेबर पेमेंट हुआ है और उसमें से तुम WIP को चार्ज कर रहे सिर्फ 20,000 और बचा हुआ आइडल टाइम है. Idle time being abnormal loss, it is directly debited to profit and loss account. So by WIP account 20,000, पहले तो 20,000 ले लो. रुको रुको, WIP का इफेक्ट दो पहले, लाइन से जाओ ना, कंफ्यूजन होगा बाद में. टू वेजेस 20,000. 5,000 का जो आइडल टाइम है, ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉन प्रोडक्टिव टाइम.
5,000. Go to P&L account, to wages control, कितना? फिर से वेजेस अकाउंट में आओ. वेजेस अकाउंट में देखो टोटल पेमेंट 30,000 हुआ है, जिसमें से 25,000 का हिसाब लग गया अपना. बचे हुए 5,000 इनडायरेक्ट लेबर है. वेयर डू यू चार्ज इनडायरेक्ट लेबर? बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स, भी फैक्ट्री ओवरहेड्स. बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट लेबर, वो कितना है समझा? प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आओ, टू वेजेस, $5,000. Selling and distribution overheads incurred, entry. Selling and distribution overheads account debit to cash or bank account. Amount is 6,000 rupees. Then other production overheads incurred 12,000. Production overheads account debit to cash or bank. $12,000. Sales, cash or bank account debit to sales. Sales account you have by cash oblique bank, 1 lakh rupees. Then cost of finished goods completed and transferred, WIP से कन्वर्ट हुए फिनिश गुड्स में, बोलो. Finished goods account debit to WIP account. WIP account credit side by finished goods account. How much? ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये ले लो ना. कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड है, वो मिस आउट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पहले कंप्लीट कर लो. बोलो 65,000. Finished goods account debit side to WIP control account, 65,000. Cost of finished goods sold, cost of sales account debit to finished goods control account by cost of sales, it is 80,000 rupees. Correct? Cost of sales के डेबिट में टू 80,000. Then physical value of WIP at the end of the month, WIP account, $40,000. By balance carried down 40,000. बराबर. Production overhead absorption rate is 150% of direct wages charged to WIP. एक मिनट, चार्ज टू WIP. WIP को कितने डायरेक्ट वेजेस चार्ज हुए? 20,000. प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर टू बी absorbed at the rate of 150% of direct wages. अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है. डायरेक्ट वेजेस पे कितने हुए थे?
25,000, नहीं पे कितने हुए थे? 25,000। बट तुमने WIP को चार्ज कितना किया है? 20,000 ही चार्ज किया, तो 5,000 नॉन प्रोडक्टिव था जो P&L गया। तो हाउ मच इज चार्ज टू WIP? 20,000. So 150% of that means 30,000 rupees will be absorbed. Entry for production overheads absorbed over WIP. WIP account debit to production overheads account. Go to production overheads account by WIP. Bracket 150% of rupees 20,000. बोलो बेटा 30,000. Go to WIP account. To production overheads. 30,000. Correct? That's it. Close the accounts. Stores ledger, what is missing? Closing balance is missing. Buy balance, carried down. Total is 1 lakh. Balancing figure is 66,000. 66,000. WIP टैली हो रहा है क्या देखो, या 1 लाख क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? विच साइड इज हायर? ओ, क्रेडिट साइड इज हायर मीन्स देयर इज abnormal gain. It is abnormal gain. अगर डेबिट साइड एक्सेस आता, क्रेडिट साइड शॉर्ट होता तो एबनॉर्मल लॉस आता, बट दिस इज एबनॉर्मल गेन. आपको कौन से टॉपिक में आता है एबनॉर्मल गेन? प्रोसेस कॉस्टिंग में आता है क्या? एबनॉर्मल गेन किस में आता है? प्रोसेस में आता है ना. सो इट इज बीइंग एबनॉर्मल गेन, इट विल बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट लिखो लेकिन एबनॉर्मल गेन. $5,000. P&L account by WIP control account, $5,000. Next, finished goods क्या मिसिंग है? क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, ढूंढो. टोटल इज 1 lakh. Balancing figure is 20,000. प्रोडक्शन ओवरहेड्स, टोटल पेमेंट कितना हुआ? 24,000. जबकि नहीं नहीं नहीं, पेमेंट बराबर बोल रहा हूं मैं. पेमेंट जो है वो तो 24,000 ही हुआ है, जबकि एब्सॉर्ब हुआ है 30,000. सो दिस इज ओवर एब्सॉर्प्शन. सो टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्यों तो कैरी फॉरवर्ड हुआ है ना, प्रीपेड था ना पिछले टाइम का. टू बैलेंस कैरीड डाउन, बोलो. ओवर एब्सॉर्ब, ओवर एब्सॉर्ब ब्रैकेट में लिख दो, ओवर एब्सॉर्प्शन. इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? कॉस्टिंग P&L, कॉस्टिंग नहीं, P&L के क्रेडिट में. नेक्स्ट अकाउंट
by cost of sales. $6,000. Cost of sales debit side to selling and distribution overheads. $6,000. Next account, wages. Tell हो गया. Cost of sales transfer to profit and loss account. Wages tally हो गया. By profit and loss account, 86,000. P&L account, to cost of sales, 86,000. Sales account close करो. To profit and loss account. $1 lakh. By sales, 1 lakh. To capital account, transfer of profit, $1,05,000. 14,000 प्रॉफिट. एक नोट लिखते बेटा छोटा सा. लिखो लिखो लिखो. One small note. Over absorbed production overheads. Over absorbed production overheads. Over absorbed production overheads are carried forward to next month. Are carried forward to next month. Alternatively, full stop देके लिखो. Alternatively, it may be credited to profit and loss account. It may be credited to profit and loss account. Done? Seventh problem जो homework बोला है उतना complete करो बेटा. See you tomorrow for the last lecture of this topic and my last lecture. Thank you. Bye bye.